नेल्सन मैंडेला once said, "It always seems impossible until it's done." और इस बात को आज साबित किया है हमारे आज के एसएसबी क्रैक टॉक्स का गेस्ट मेजर अभिनंदन सिंह ने। इन्होंने अपने 30 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। He decided to get transition from his army career as a major to a civil servant by taking UPSC examination. और ऐसा अचानक से क्यों हुआ? Because of a very unfortunate incident which happened with him, जिससे उनको एक इंजरी फेस करना पड़ा. Because of that injury, he thought that it is not proper for him because he's not able to give his 100% to the army. He took a major decision at such an age and decided to switch his career from the army to the UPSC. आइए सुनते हैं उनके ही जुबानी से, उनके जुबान से the most inspiring story for today's SSB Crack Talks session. Hello, Major. How are you? Hi, Anuradha. Good evening. I'm good. How are you? I'm fine as well. Thank you, Major, for taking such a precious time out of your very busy schedule and coming to our platform. And you are willing to share your very motivating story to all our viewers here. So thanks a lot. And I welcome you on behalf of SSB Crack Exams. So Major, first question जो हमारे viewers हैं उनके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा feel हो रहा है coming onto this platform and sharing your motivating story with the viewers here. Anuradha, first of all, thanks to SSB Crack Exam that you have invited me to your platform. And as far as how I am feeling, I'm actually feeling really good and really happy at the moment because I'm getting to share my story with the prospective aspirants who wish to join the defense forces as well. And maybe some of them willing to or wanting to prepare for the civil services as well. So it gives me really a lot of happiness to be here. Okay, so I would surely love जो हमारे व्यूअर्स है वो आपको देख के जरूर मोटिवेट फील होंगे एट द वेरी एंड ऑफ दिस एंटायर सेशन. दे विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू बिकॉज योर स्टोरी इज रियली रियली इंस्पायरिंग. सो विदाउट एनी मच फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं मेजर, और मैं आपसे पहले सवाल क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि कॉलेज डेज में जब आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हुए थे तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था आर्मी ज्वाइन करने के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि बचपन से ही जब मैं स्कूल में था, स्कूल लाइफ से ही हमेशा घर वालों ने ऐसी अपब्रिंगिंग करी है, स्कूल लाइफ में ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है कि देश सेवा का भाव जो था, दैट हैज ऑलवेज बीन इनग्रेन्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें देश सेवा का मौका मिले. तो अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद जब इंजीनियरिंग में एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक करी है मैंने, तो बीटेक के दौरान ही हमारे प्री फाइनल ईयर में उस वक्त एक एंट्री हुआ करती थी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम. तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम 23 के तहत आर्मी की एक टीम, जो ऑफिसर्स की टीम आर्मी हमारे कॉलेज में आई थी, और उसी इंटरव्यू के दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ एसएसबी में जाने के लिए. तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मैं देश सेवा के लिए वो पहले ही प्रेरणा थी कि कुछ ना कुछ करना है. तो जैसे ये मौका मिला तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के एसएसबी चले गए और लकीली एसएसबी क्लियर भी हो गया. That's great. एसएसबी में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है और बच्चे जो है काफी तैयारी करते हैं एसएसबी के लिए. तो आपने अपने एसएसबी के लिए कैसे तैयारी किया था, और एसएसबी में जाने के बाद कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट है आपके मन में जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं अपनी तैयारी के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू. तैयारी मैंने कोई स्पेशल तैयारी मैंने नहीं करी कभी भी एसएसबी, अगर आपको मैं फ्रैंकली बताऊं तो जैसा मैंने कहा कि आर्मी की टीम हमारे कॉलेज में आई थी, तो जस्ट हमें इंफॉर्मेशन हुआ कि आज आ रही है, तो फॉर्म भर के उसी दिन इंटरव्यू के लिए बैठ गए जाके. तो लकीली उस दिन सिलेक्शन हो गया. बट अदरवाइज ऑल्सो जब एसएसबी का पता था कि एसएसबी के लिए जाना है, तो कोई खास तैयारी करी नहीं, क्योंकि बचपन से मेरा ऐसे मानना है कि एसएसबी को देखने के बाद इनफैक्ट मैं आपको ये बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि एसएसबी मेरे ख्याल से और मेरी असेसमेंट के हिसाब से एक एग्जाम नहीं है. एसएसबी एक मिरर की तरह मैं मानता हूं, जिसके सामने आपको 5 दिन खुद जाके खड़े होना है, अपना व्यक्तित्व जो है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसको देखना है. तो मैंने इसको कभी एज एन एग्जाम कभी लिया ही नहीं. मेरे लिए हमेशा ये लर्निंग प्रोसेस था, जहां मैं जाके अपने आप के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से जान पाऊं. That's a great thing you said, Major. बहुत बच्चे अभी तक एसएसबी को एक रिटन टेस्ट की तरह या जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग टेस्ट देते हैं उसके तरह मानते हैं, पर ये बिल्कुल नहीं है. जैसे आपने कहा, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी.
more than a written test or any kind of interview. बिल्कुल सही आपने कहा मेजर. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर आप कोई ऐसे इंसिडेंट जो आपको याद है, जो काफी यादगार है आपके लिए, जो एसएसबी में आपको फेस करना पड़ा, और एसएसबी का प्रोसेस आपके टाइम में कैसा हुआ करता था? तो सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जीवन में 3 एसएसबी दिए हैं। तो पहला जो एसएसबी मैंने दिया था वो एयर फोर्स का एसएसबी था। एफकैट का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था। आई थिंक आजकल भी प्रोसेस सेम है। एफकैट का एग्ज़ाम आप देके एसएसबी के लिए सिलेक्शन। तो एफकैट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो उसके बाद देहरादून में 1 एफएसपी में गया और लकीली उसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा। फिर सेकंड जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत आर्मी की टीम आई। आर्मी का 19 एसएसबी इलाहाबाद में मेरा एसएसबी हुआ था। तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। थर्ड एसएसबी जो मेरी असेसमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता था कि तीनों एसएसबी में वो मेरा सबसे बेहतरीन एसएसबी गया है। वो मेरा एयर फोर्स के लिए फ्लाइंग के लिए था, क्योंकि जो इनिशियल जो पहले हुआ था एयर फोर्स का, वो ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए था। तो मेरे मन में था कि फ्लाइंग के लिए भी एक एसएसबी दे के देखते हैं। तो आप मेरे असेसमेंट के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया वो बेस्ट था, बट उसमें पूरा बैच वॉश आउट हो गया। तो जैसा फिर उसी से लर्निंग मिलता है कि एसएसबी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हो सकता है कि आपने अभी क्लियर करा है, नेक्स्ट टाइम ना भी हो पाए। तो आपको निराश नहीं होना है। और जहाँ तक रही बात किसी ऐसे मोमेंट की जो मुझे आज भी याद है, तो मैं इंटरव्यू की बात करना चाहूँगा। जब ये आई थिंक एयर फोर्स की एसएसबी जो फर्स्ट एसएसबी मैं दे रहा था, तो जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो इंटरव्यूअर मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछने लगे। तो आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट कि टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा इतना स्ट्रांग था नहीं। तो काफ़ी क्वेश्चंस बिगिनिंग में ऐसे थे कि मैं किसी का भी जवाब अच्छे से नहीं दे पाया। बट उसमें अच्छी बात ये थी कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करा। मैं थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ था उस इनिशियल 5-10 मिनट के टाइम पे। बट उसके बाद जब वो मेरी फ़ील्ड में जो मैंने ज़िंदगी में कार्य करे थे अपनी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में काफ़ी एक्टिव था। मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करी थी अपने कॉलेज डेज़ में विश्वास के नाम से। तो जब उन चीज़ों के बारे में मुझे क्वेश्चन्स पूछे जाने लगे, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंटली, पूरा अच्छे इलैबोरेटली आंसर्स देने लगा। तो इसका बताने का मेरा जो मेन एम यही है बच्चों के लिए कि अगर आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से सही नहीं भी जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग में एक सेट चीज़ें हैं जो उसने आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है, कि आप चैलेंजेस को कैसे ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 4 या 5 फैक्चुअल चीज़ों के अगर सवाल, फैक्चुअल क्वेश्चन्स के आंसर्स आप नहीं भी दे पाते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी जज किया जा रहा है। So that was also very good advice from your end, Major. Again, बच्चे थोड़ा disappointed हो जाते हैं स्पेसिफिकल इंटरव्यू में जाके कि ये सवाल का आंसर मुझसे कैसे नहीं मैं दे पाई है। तो yes, that's absolutely right कि ऐसा नहीं है कि आप विकिपीडिया हो चलता फिरता, पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो ट्रूथफुली बताना। Absolutely, absolutely. Okay, Major. So that was a really lovely experience you talked about because yes, बहुत बच्चे थोड़ा पर्सनल इंटरव्यू को लेके दे आर इन लॉट ऑफ टेंशन. तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है मेजर कि अगर जैसे आपने कहा कि 3 एसएसबीज में आपको सिलेक्शन मिल गया था, सो ऐसा कौन सा एसएसबी एंट्री था या कौन सा एसएसबी था जिसके थ्रू आपको एक्चुअल आर्मी में जो है ट्रेनिंग मिला या आर्मी में आप एकेडमी ज्वाइन की? जी, मैं फाइनली आर्मी का मैंने एक ही एसएसबी दिया था, 19 एसएसबी इलाहाबाद, व्हिच वाज़ अंडर द यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। तो फाइनली मैंने आर्मी जॉइन करा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत, जो कि एक टेक्निकल एंट्री हुआ करती है। तो आई थिंक प्रेजेंटली अभी वो कैंसल हो गया। लास्ट उसका आई थिंक यूएस 23 वाज़ द कोर्स दैट आई जॉइन्ड, एंड आई एज़ फार एज़ आई एम अवेयर यूएस 25 वाज़ द लास्ट कोर्स। Okay, so you joined, as I know, Indian Military Academy, Dehradun, right? So, आपका first day कैसा था when you set your foot in the IMA itself? आपका first day के बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं? It is actually very hard to explain that feeling, because Indian Military Academy has always been that carrying that aura and grandeur with itself. And once you see it for the first time live in front of your eyes, it is actually quite a worthwhile experience. But as soon as you start with the routine and you meet with the boys, the first day is still fine. But by the evening, when there is a official fallen, that is when the reality strikes you, and the the other world is what is on what is we see from there. Then.
Okay, so मेरा next question इसी पे है about the training, because our viewers do not know कि IMA में actually क्या होता है, training processes क्या रहती है, कितना hard training रहता है. तो अगर आप अपने training days के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और अपने training के वक्त अगर आपको ऐसा कोई भी incident याद है जो आप share करना चाहते हैं. जी, आप किसी भी ऑफिसर को पूछ लीजिए जिसने ट्रेनिंग करा है, ट्रेनिंग का एक इंसिडेंट बताना मुश्किल है. ट्रेनिंग में हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो वी कैन राइट अ बुक ऑन दैट. बट इफ यू आस्क मी द अबाउट द ट्रेनिंग करिकुलम, तो ट्रेनिंग करिकुलम बिफोर आई टेल यू व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं, तो सबसे पहला जो हमारा असेसमेंट और मेरा पर्टिकुलर असेसमेंट है, ट्रेनिंग का एम इज़ टू, जैसे वो बोलते हैं, टू मेक मेन आउट ऑफ बॉयज़. तो मेन उसका वो है कि आपकी मेंटल लिमिट जो है, फिजिकल लिमिट तो वो पुश करते ही करते हैं, बट आपकी मेंटल लिमिट जो आपका टॉलरेट करने की क्षमता है, उसको बढ़ाना है. तो उस एम से आपको भी, जो कैडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी ये चीज लेनी है कि वो जो फिजिकल रिगर आपको देते हैं, दैट इज नॉट टू पुट यू अंडर एनी ट्रबल, बट दैट इज ओनली टू पुश योर लिमिट्स. आपके लिमिट्स को, आपके थॉट प्रोसेस को ऐसा बनाना कि उसके बाद जीवन में कोई भी दुविधा आए, कोई भी मुसीबत आए, आप उसको आराम से बिल्कुल टेक्निकली और बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली उसको आप डील कर सकते हैं और आपको वो लगेगा ही नहीं कोई प्रॉब्लम बड़ी है. तो मेन एम वो रहता है. अभी मैं बात करूंगा करिकुलम की, तो करिकुलम का वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 5 o'clock शुरू हो जाता है. आपको मतलब जितना जल्दी हो सकता है उठ के आपको पीटी के लिए रेडी होना है. तो पीटी तो वही ऑफिशियली 1-1.5 आवर्स चलती है. उसके बाद इट्स हार्डली 40-45 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, जिसमें आपको पूरा रेडी होना है, फॉर्मल्स में रेडी होना है, अपना रूम साफ करना है. उसके बाद आपको मेस टाइमिंग फॉलो करनी है. मेस में खाना खा के जहाँ आपकी क्लास होती है, वहाँ आपको डॉट टाइम पे पहुंचना है. और अगर आप, इफ वी आर नॉट एबल टू रीच इन टाइम, तो ऑब्वियसली देयर आर पनिशमेंट्स फॉर दैट. पनिशमेंट्स की वैरायटी देयर आर, आजकल तो इट्स लॉट ऑफ देम अवेलेबल ऑन दी सोशल मीडिया आल्सो. बट दैट इज द चैलेंज. टू they make you disciplined, and initially it feels like it is kind of punishment, but over a period of time you realize that it is actually to mold you accordingly to the requirements of the army and what the country needs from the army. तो उसके बाद आपका क्लासेस होती हैं. क्लासेस वेरी फ्रॉम, वेपन ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं और आपका थ्योरी का क्लासेस होता है. थ्योरी का क्लासेस में दे टीच यू टैक्टिक्स, दे टीच यू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. लॉ पढ़ाते हैं आपको. एंड अदर देन द वेपन ट्रेनिंग की बात अगर मैं करूं, तो वेपन ट्रेनिंग इज द मोस्ट ड्रेडेड ट्रेनिंग आर्मी में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, फॉर दैट मैटर किसी भी अकेडमी में. तो वेपन ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग कम होती है, बाकी चीजें ज्यादा होती हैं. तो वो एज एंड व्हेन जो ज्वाइन करेंगे उनको पता चलेगा कि वेपन ट्रेनिंग इज मोर अबाउट मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द वेपन ट्रेनिंग ग्राउंड rather than actually firing the weapons. यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ज्यादातर जो, अगर आप देखोगे, यंग बॉयज है, यंग वुमेन यहाँ पे है जो ज्वाइन करना चाहते फोर्सेस का, उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये वेपन्स ट्रेनिंग में ही रहता है. एंड स्टिल यू आर सेइंग कि वेपन्स ट्रेनिंग इज द मोस्ट ड्रेडेड वन. ऐसा आपको क्यों लगता है? It is not dreaded because of the weapons, it is dreaded because that is the place. क्योंकि बाकी जो क्लासेस मैंने आपको बताया वो theory classes हैं. तो theory classes में the instructor has to come and teach you about books. तो उसमें generally, मतलब when a cadet is tired with the routine activities of the day, starting from morning till evening, then the same process repeats every day, then at max what the maximum punishment is, he will be either becoming a what we call the murga, or some other punishment, he will be rolling or something like that. The scope is very limited because he will be around the classroom only. But the weapon training, it is a huge field. It is a huge field spanning some across a kilometer, and it is situated actually so far away from the main training area of the academy. You have to reach it is, I think, 5 to 7 kilometers from the main area. So you have to travel on your bicycles, and somehow if your bicycle goes, there is a rule in the academy, you have to go in squads of 4 to 6 or 8 like that. So if you do not find a person to tie up with, then also you land up in punishments. Or if, for that matter, if your cycle goes wrong, some puncture is there, or some other problem with your bicycle, then also there are problems. So the problem is not with the weapon training. It is the nature of that, and it is also the requirement also, because weapon training needs discipline, it needs strength in your nerves, in your arms, and that is only possible when you work out that much. So it is not dreaded in the sense that it is very difficult, but it is it has to be taken in the right spirit of learning. That is what I mean. ऑल राइट. सो अभी जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू को और ये सोच रहे हैं कि वेपन्स ट्रेनिंग में बहुत मजा आएगा,
थोड़ा सा केयरफुल हो जाना अभी से, बिकॉज यू नीड टू बी रियली डिसिप्लिन, एज मेजर सेड. सो मेजर, आप ये भी बात बोल रहे थे कि पनिशमेंट्स बहुत मिलते हैं, तो आपको, एंड एवरीबडी नोज दैट पनिशमेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फोर्सेस, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज इट मेक्स यू अ मैन आउट ऑफ अ बॉय. तो किस तरह के पनिशमेंट्स आपने देखा या आपको मिला था, और उनमें से कौन सा ऐसा पनिशमेंट था जो आपके लिए काफी मुश्किल हो गया था करने में? Punishment, there are a lot of variety of punishments, like even if you falter on a particular thing, like I gave the example of, अगर आप bicycle squad में जा रहे हैं, आपका squad पूरा नहीं, 4 बंदे आपके पास नहीं, and the first and the foremost punishment, आपको drill उस्ताद रोकेंगे आपको वहीं पे, or he will find that you are not adhering to the rules. Then immediate punishment is to lift the bicycle on your shoulders and walk all the length of that. And other than that also, then if you are not having a bicycle, or you are at some maybe games field, then since the bicycles are not there, you may be rolling across the fields, then you may be lifting your buddies and going from place A to place B. So there are lot of variety in the punishment. And the most interesting part is, once you are done with the evening meal, the dinner, so-called dinner, when you are done, after that, once you are back to the dormitories, you are actually, we may call it a punishment, but personally I felt that it was a very good step to bring everyone at par, because once you join the academy, different people have different physical standards. If you talk about me, I have always been playing basketball, so I did not have much issue with the physical stuff. But there are people who have not seen the physical part of it. So the aim is to bring everyone at par. So that is only possible when everyone trains together. So even after the meals, what we used to do, we used to gather around one of the seniors' room, and then people call it ragada, but I would call it training to make you strong. That's nice. That's nice, Major. How you are taking the things in a positive spirit is really, really inspiring. So मेरा next question है, Major, कि as we all know कि academy में आपके juniors भी रहते हैं, आपके peers रहते हैं, आपके seniors रहते हैं, तो इनके साथ आपका कैसा bonding था, या इनके साथ आप कैसे time spend करते थे? If you ask me frankly, time in academy was a very scarce resource. It is actually a luxury. And the best way, मैं आपके कैडेट्स को भी बताना चाहूंगा, अगर आपको टाइम निकालना है तो बेस्ट वे इज टू बी फिजिकली फिट. अपने पीटी टेस्ट आप टाइम पे पास करें, और दैट इज द ओनली वे. आपको सीनियर्स भी कुछ नहीं कहेंगे. जो गेम्स और बाकी इवेंट्स हैं उसमें आप अच्छा करिए, पूरा एफर्ट मारिए और अपनी कंपनी को जिताइए. वंस यू डू दैट, ऑब्वियसली सीनियर्स विल बी हैप्पी विद यू, क्योंकि द होल एम ऑफ द एंटायर ट्रेनिंग इज टू, one, to make you strong, and second is to teach you skills. If you're learning the right thing, then of course you will have a little easy time as compared to if you're not doing well. So there's always been a camaraderie between seniors and juniors. In fact, the most anticipated event of the academy is the cross country race, in which the entire company, all seniors, juniors, and everyone comes together and they fight together, sweat it together, so as their company wins. So there's a lot of bonhomie, lot of camaraderie. So that is what is taught right from the academy. Right. So it will be a lot of fun for the viewers here जो भी try कर रहे हैं अभी आईए में जाने के लिए या आर्मी में join करने के लिए, and you could understand from Major here that he has really enjoyed his time in IMA. So my next question, Major, to you is कि आपका कोई ऐसा culture याद है IMA का, या tradition याद है जो कि you think that is the best tradition that you have seen so far, या जो काफी useful है, या जिसको आपने enjoy किया है सच में? I would not mention the culture, but the most important lesson that we draw out of IMA, there is one Chetwode Credo that we are made to recite almost every day. There are two, one is the Chetwode and the other is a warrior code is there. So I would specially mention the Chetwode Credo, which, because they do teach us in the army, but as far as I am concerned, it should be taught in fact, schools and colleges also, because it tells you about your basic priorities, how you prioritize life and your goals. It says that the first and the foremost, it is the country that matters. It says that the comfort, the safety, honor, and welfare of your country comes first, always and every time. Then comes the safety, honor, and welfare of your troops, the men you're commanding, and finally your own ease, your own comfort, your own welfare. It will always be the last. So this is something that I think we need to learn. We have been taught, and in fact, we need to take it beyond army also to other walks of life, so that we are able to make that impact and do it well for our country.
Absolutely. So again, that's a very really inspiring thing you told us, Major. And I think यहाँ पे जितने भी viewers हैं, they are really really eager to join the army because of these lovely things you shared, which happens in IMA. So, Major, मेरा next question ये है कि आईएमएम ने आपने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद यू जॉइंड द आर्मी एज अ एज एन ऑफिसर. तो आपका जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसा था? हाउ यू स्टार्टेड वर्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू यूज्ड टू डू? व्हाट वर योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज? कहाँ आपको पोस्टिंग्स मिला था? इफ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट योर वर्क प्रोफाइल देयर. So first of all, I'd like to tell you viewers that I was commissioned into the Corps of Signals. So the Corps of Signals is a very versatile, very dynamic and very evolving, and it has to do a lot with the communication technologies, the latest AI technologies. So it was a very interesting thing to work in. In fact, I was amazed that whatever things I had learned in the 4 years of engineering, some of my batchmates in the engineering might not have gone on to practice them. But in the Corps of Signals, in the army, I got to practice all of them. In fact, most of them, from laying down the lines to ensure that the communication, in civil parlance, if I tell you, it is just like you use your mobile phones, or that time earlier we used to use landlines. So that is one aspect of ensuring communication. Then we had satellite communication. Then there is another aspect to it, which in my last unit I worked, it was about gathering intelligence from the electronic sources. So it was a very versatile. My first posting was in Tezpur in Assam. So that was a core headquarters where I was posted. So as you first join the unit, so you are supposed to learn a lot of things, because we are just going out of the academy fresh with a lot of josh, but actually very, very minute, or I would say zero practical knowledge of how the unit functions. So the first 6 months, in fact, I would say that first tenure of the unit, the first 1.5 years, is all about learning how you deal with your men, how you respect your seniors, how a unit functions. And all you need to do is to do everything with josh, as we call in the army or in the academy. We have to do everything with josh, right from waking early, going in the PT, running with the men, making them do hard PT. Then of course whatever task is interested, because once you join the unit afresh, there's not a specific mandate that is given to you, because you have to learn a lot of things. So that is the time when you are in the learning phase. And once you are screwed up and understand how the things work, then of course you are put to other tasks. And then my second posting, if I would were to mention, it was in Amritsar. It was a div headquarters, and again the almost the job profile was almost same. And again, a lot of things to do with the administrative stuff, because it was a peace unit. And my final unit, which happened to be it was a signal intelligence unit. So I did a lot of interesting operational tasks. It was in relation to gathering some information using electronic media. So that was really interesting. And I was right on the IB international border. So it was very challenging. At the same time, it was very interesting, and I would enjoy doing it. So anyone who wants to join your particular core of signals, what can be the USP of this? कौन से चीजों के लिए that person should join your core? For the Corps of Signals, the first preference, or the first thing that is seen is your educational background. For me, since I had done my graduation in electronics and communications, so the Corps of Signals was a natural choice for me. In fact, it was the first preference in the academy when we filled the options for that. But otherwise also, it is not sacrosanct that only those who are having the degrees will be going. Other people also opt for it, and other people also go. And over a period of time, they are made to undergo a lot of courses, technical courses, in which, in fact, they are made, those not having any technical background, they are made to undergo a degree also, 3-year degree to 2-year courses they are made to undergo, so that they understand how the technology works, and then they are put to use. So there is no limitation. You should be willing to learn. That is the major USP for this. Okay, and now coming to the most inspiring part of this interview, जिसके लिए मैं बहुत पहले से आपका इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन थी कि इतना इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ने के बाद it is inspiring for us, but it is very unfortunate, I would say, on your part. So let us talk about Major वो दिन के बारे में when you faced the accident which is going to change your life forever. So आप उन दिन के बारे में थोड़ा सा अगर हमें बता सकते हैं, what actually happened and how it affected your life, you think?
So, Anuradha, as I already told you, I had always been an active sports person. I had been playing right from my school days and college days. Basketball was my game. So, you can call me after the army. It was the love of my life. So, I used to play it. In fact, in the first unit, I had played so extensively. We won so many tournaments. But they say sometimes things happen which are beyond your control. If you are playing certain thing or you are exposing something, some things are bound to happen which are not in your control. So it started, in fact, the injuries started happening in the first unit itself. First unit, one of the, I think it was a core event in which we were playing a football game. So the first injury happened that time. It was a leg injury. It was a huge impact with the opposition player. But luckily, that was still manageable. And I continued playing. I continued running. I continued doing all the activities that were required. But once my first unit got over, I was required to undergo a young officers course. It is a mandatory course which all the officers have to undergo. So it is during that particular course, it is a training event, and in that particular course, I was playing a basketball game, and unfortunately, it was a semi-final game. We lost that game also, and just a few minutes before the final whistle, I had a great impact with one of the opposition players. He was actually a little on the bulkier side, so he fell onto me, and it had a great impact on my back as well as my ligament in the ankle. So since I already had certain injuries, so it only added to the injuries. And over a period of time, when I got the diagnosis done, so it was issue with my spine also. There was disc bulge was there, and plus the ankle ligament was torn completely, and there was some neuromuscular disease happening, neuromuscular changes happening in the back and the leg. So over a period of time, I stopped running. In fact, I could not run. Even walking for long distances became problematic. And once I went to the second unit in Amritsar, even in the office times also, I had to take a support for my ankle and sit with some support for the ankle. So that is the time I thought that things are not going as per the plan. And I may not be able to serve the Indian Army with the same passion and same efficiency as I would like to. I always had the option that I could have continued with my injury in the army, but I thought I may not be able to give my best, because army is about camaraderie. It is about running with your men, sweating it out with your men. But that part, which is the most wonderful part as per me, that started taking a backseat because of the injury. So that is the time I decided that I need to switch so that I will continue to serve the country, but in a different way, which is not harmful for my injury as well, and in which I can do much more effectively for the country. So, did it had any impact on your mental health or on your thought patterns, or you took it in a very sporting manner? जैसे मेरा ये सवाल है मेजर कि जब आप अभी प्रेजेंटली उस इंजरी या उस डे के तरफ मुड़ के देखते हो, so how do you feel about that particular decision that you have taken or on the day itself? Anuradha, I would like to tell you that my philosophy in life is very simple. It says that look back and you're dead. So I never look back with regret. Of course, Army, one of the most, in fact, the most wonderful organizations that our country, or in fact, the entire world has, the Indian Army. The culture, the ethos, the spirit that comes with the Indian Army, it is unmatchable. But having said that, I would have loved to serve Army more efficiently. Since that was not going to happen with my injury, I waited a lot of time. 2017 was when I got injured, and 2.5 years I waited. It just got bad. So that is the time I decided that things have to be. And in terms of whether I took it sportingly or not, the answer lies in the training academy, because we have been taught that whatever challenges that life throws you in, and whatever the what we call the storms are there in life, they are only there for a reason, and it is our duty that we have a mindset to make it a very good reason and very productive reason. So that is what I did. Hats off to you, Major. I think बहुत ऐसे कम ही लोग होंगे जो आपकी तरह ये सोच के बस आर्मी क्विट करने का मतलब या स्विच करने का डिसीजन लिया है कि आई वोंट बी एबल टू गिव माई 100%. इफ यू लुक एट अदर सिचुएशंस, अगर ऐसा सिचुएशन किसी और का भी होता तो दे वुड नॉट हैव ऑब्वियसली स्विच्ड. आई मीन they are still having the option to serve the army, to continue where they are, but you decided to switch just because you cannot give your 100%, which is quite, again, a very hats off to you, Major. A very very inspiring thing from you. And I have also learned this phase जो आपने अभी कहा कि you look back and you are dead.
एंड दैट इज एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू. बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे ये इंटरव्यू भी देख रहे हैं, दे ऑल्सो आई थिंक विल अग्री विथ यू मेजर. तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू ट्राई टू स्विच टू यूपीएससी. तो अभी यूपीएससी इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट. बहुत बच्चे एकदम घबराते हैं जब हम बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करें. यूपीएससी लाइक इज अ बिग थिंग ऑल टुगेदर. तो कमिंग एट दिस एज, फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस एज, व्हाई? बिकॉज बच्चे जो है बहुत पहले से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करती है यूपीएससी के लिए. आप इस एज में कैसे डिसाइड किए कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, या यूपीएससी की तैयारी आपने कैसे स्टार्ट किया? Again, the answer lies way back in the history when I was being brought up by my parents and the schooling I had, the teachers I had, and the culture that I learned in the academy. The service of the country has always been first, as I mentioned in Chetwode Credo. So the nation has always been first priority for me. So it was logical for me that if I am not able to serve the country in the best possible way by being in the army, I have to find an alternative in which I could still be serving the country. I'm not saying that UPSC and army are the only ways in which we serve the country. But as far as my abilities are concerned, my USP is concerned, that is more suited to these two organizations. So that is the reason I chose to switch from the army to the civil services. And in fact, I would like to mention here that I was a permanent commissioned officer. The officers who undergo training in the Indian Military Academy, Dehradun, they are the permanent commissioned officers. So my terms of service were 20 years. So it was not just a difficult call, because entering the army, as you would understand, your cadets should understand, it is very difficult. And even clearing the SSB is not easy. But even more difficult is for a permanent commissioned officer to leave the army, because army has invested in you. Army has seen that this person is doing well. So it is a loss to the organization also. So they do not leave permanent commissioned officers that easily. But at the same time, I got lucky. And in a way, I would say that I've always believed that if your intentions are pure, if you are sincere to the goals that you have, and your goals are good to the service of the country, then of course the universe will help you. The universe will conspire to make sure that your plans become fruitful. So that is, I think, how I ended up. My resignation also got approved, and somehow I also entered into the UPSC. So आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कैसे की, एंड हाउ यू गॉट दैट मोटिवेशन दैट नाउ यूपीएससी इज द थिंग दैट आई शुड फोकस ऑन? कैसे स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन? बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. यूपीएससी इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन. Again, I would take you back to the academy. There is no limit. The difficult part is all in the mind. Difficulty is just a thought process. If you believe that you have a passion for something, if you believe कि अगर आप में वो आग है कि कुछ भी करना है, देश सेवा में कुछ भी करना है, आपको एनजीओ चलानी है, अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, अगर आपको मीडिया में जाना है, अगर आप में वो आग है, तो आई थिंक यू विल नॉट फोकस ऑन द डिफिकल्टी. मेरा हमेशा से लाइफ में एक एम रहा है, यू विल ऑलवेज फाइंड प्रॉब्लम्स, यू विल ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशंस. आपका वो नजरिया क्या है, आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हो या सॉल्यूशंस को देख रहे हो? एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट इट इज very important that we focus only on the solutions. Identify the problems, yes, it is very important, but आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा मोटिवेशन उसका सोल्यूशन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन इज व्हाट विल लीड you out of the trouble. So there was never an iota of doubt. There was never any hesitation in me that I will be able to do it, because army gives you that confidence, and that gives you that fire in the belly, we call it, that you will do it. So I think there was never a doubt in my mind. Have you taken any UPSC exam till now, Major? So not at all, because I was in the army. I was serving all the while until I cleared the exam. So I did not have the luxury. And plus, I've always been of the thought process that coaching is something which only derails your entire plans. Because if you make your strategy, because coaching will give you a holistic picture, that's fine. But you need to, at the end of the day, you will have to come back home and study. If you're not able to come back home and study, then I think there's no point. So I did not take, and I do not recommend also. तो आपका अपकमिंग प्लान्स क्या है रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन? कैसे आप बढ़ना चाहते हैं विद द प्रिपरेशन? As of now, in the 2022 exam जो हुआ, उसमें I got the 749 rank, and in that I have been allotted the Indian Railways Management Service, which I will be joining in a couple of weeks time. And other than that, in the 2023 में जो एग्जाम हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने प्री क्लियर कर लिया था, अभी मेंस हो गया है ऑलरेडी. So I think I'm done with the process. अभी let's wait for the results.
hopefully results will be fine and I am able to improve the rank and contribute in whatever way possible for the benefit of the people of the country. Lastly, I would want to end this beautiful and very interesting session with you, Major. वैसे मन तो मेरा नहीं कर रहा है, because whatever you are saying has been inspiring me a lot. I would say कि ऐसे बहुत सारे unfortunate incidents बहुत army personnel या armed forces personnel के साथ हो चुका है, but they have never thought to switch coming after so long at this particular age where the armed forces was not letting them to quit. उन्होंने खुद decision लिया and then switching. I have not found any such story except yours. तो मेरा last question यही रहेगा आपसे मेजर कि जो हमारे young blood हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए बेताब है, दे आर ट्राइंग हार्ड, मे बी कहीं पे जाके एसएसबी में नहीं मिल रहा है, रिटर्न में क्लियर नहीं हो रहा है, दे आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, उनको कौन से थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एंड एनी टिप्स और सजेशंस यू वुड लाइक टू गिव टू देम सो दैट दे कीप ऑन गोइंग एंड जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस? First of all, to all the youngsters of India, I do not call them the youngsters of India. Whenever I address the youngsters of India, I always call them the proud young citizens of India. So you have to realize that you are the citizens of this great country, which has a rich history, which has a rich culture. So you need to first be proud of that culture, proud of that history. Once you are in love with the country, then of course, when the next question comes, how to do it and in what field to serve. If you are wanting to come to the armed forces, believe me, armed forces have a culture which is unmatchable. It will give you, it is in fact, as everyone calls it, it is a way of life. It teaches you camaraderie, it teaches you brotherhood, it teaches you so many things that will help you deal with the currents of the life very smoothly. Now coming to the aspirants who are preparing for the competitive examinations or for that matter SSB, जैसा मैंने आपके कैंडिडेट्स को पहले बताया कि SSB को एज एन एग्जाम आपको लेके नहीं चलना है. SSB एक ऐसा मिरर है जो 5 दिन जहां आपने उसके सामने जाके खड़े होना है. आपको सिर्फ एक उद्देश्य से जाना है कि इन 5 दिन में मैं अपने आप के बारे में बेहतर अपने आप को जान पाऊंगा, अपने आप की जो कमियां हैं वो निकाल पाऊंगा, आइडेंटिफाई कर पाऊंगा और उनको इंप्रूव कर पाऊंगा. अगर आप इस थॉट प्रोसेस से जाते हो तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक इट. क्योंकि क्या है कि अगर आप उसको एज एन एग्जाम, एज अ कॉम्पिटिशन लेके चलोगे तो देन समहाउ क्या होगा कि यू विल हैव दैट प्रेशर. तो प्रेशर अगर आपको लेना है तो फिर थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है. देन यू स्टार्ट कंपीटिंग विद जो बाकी के वहां बच्चे आए हैं सेम चीज के लिए. तो आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि एसएसबी में आपका कंपटीशन आपके साथ वाले बच्चे से नहीं है. अगर एसएसबी में 40 बच्चे आए हैं और 40 के 40 डिजर्विंग हैं तो आर्मी विल टेक यू, बिकॉज आर्मी नीड्स मेन हु हैव दैट. इफ यू हैव इट इन यू, डेफिनेटली यू विल बी टेकन. एम इज टू जस्ट इवॉल्व, अपनी पर्सनैलिटी को निखारें. जितना ज्यादा अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत करेंगे, अपने पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल एस्पेक्ट्स, अपनी बॉडी को शेप में लेके आइए, अपने मेंटल एस्पेक्ट्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी आप पार्टिसिपेट करें, चीजों में पार्टिसिपेट करें, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप इवॉल्व हो जाएंगे. और सेकेंड चीज, जिन बच्चों का एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने आप को निराश मत पाइए, क्योंकि जैसे हर बंदा एग्जाम्पल देता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी का, तो ऐसा नहीं है कि आर्मी में आना ही एकमात्र जरिया है देश सेवा का. देश सेवा के बहुत जरिए हैं. यस, अगर आप आर्मी में आना चाहते हो तो बिलीव मी, आप इन चीजों पे फोकस करिए, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करिए, रादर देन कि मुझे कंपीट करना है. अगर आपको कंपीट करना है तो अपने आप से कंपीट करिए. योर एम शुड बी टू बी बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे. अगर आप उस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस बनाते हैं तो आई एम श्योर यू विल बी सिलेक्टेड. कोई डाउट नहीं है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बट कंडीशन यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी को निखारें. तो यही आपके बच्चों के लिए एक मैसेज है. थैंक यू सो मच मेजर. आई माई सेल्फ एज आई सेड कि काफी इंस्पायर्ड मैं फील कर रही हूँ आपके साथ बात करने के बाद, और आई होप कि जितने भी व्यूअर्स आज हमारे इस सेशन को देख रहे हैं वो भी काफी मोटिवेटेड फील किए होंगे आपके बातों से, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फायर आई कुड सी इन यू, दिस स्टिल बर्निंग. एज यू हैव सेड, you've resigned, the soldier has resigned, but that fire has not resigned from you. So that I could see in you still burning, and I hope कि आगे चल के आपको जो करना है हमारे देश के लिए वो आप करते रहे, आगे बढ़ते रहे, and the country will be with you. Again, I want to thank you on behalf of SSB Crack Exams and SSB Crack Talks to spend such a beautiful time with us and helping us to know you better, to know the things better about the army itself.
So thank you so much for coming here and inspiring the people around us. Thank you so much, Major. Thank you so much, Anuradha, and thank you to all. Jai Hind. Jai. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।